श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायाम् अथ सप्तविंशोऽध्यायः। पार्वती उवाच। शृणोति द्विजेन्द्रजटिलमद्वृतं निखिलं खलु सख्युक्तं मेघा यत् सत्यं तथैव न चान्यथा मनसा वचसा साक्षात् कर्मणा यति भावता सत्यं ब्रवीमि नो सत्यं वृतो वै शङ्करो मया जानामि दुर्लभं वस्तु कथं प्राप्यं मया भवेत् तथापि मन औत्सुक्यतेऽद्य तपो मया ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा वचनं तस्मै स्थिता सा गिरिजा तदा उवाच ब्रह्माणस्तत्र तच्छ्रुत्वा पार्वती वच ब्रह्मनुवाच एतावत् कालपर्यन्तं मेच्छा महती हा भूता किं वस्तु काङ्क्षति देवी कुरुते सुमहत्तप तज्ज्ञात्वा निखिलं देवी श्रुत्वा त्वन्मुखपङ्कजात् इतो गच्छाम्यहं स्थानादेच्छसि तथा कुरु न कथ्यते त्वया मित्रं निष्फलं भवेत् यथा कार्यं तथा भावी कथनीयं सुखेन च ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा वचनं तस्य यावदगन्तुमीयेष स तावच पार्वती देवी प्रणम्योवाच त्वं द्विजं पार्वती उवाच किं गमिष्यसि विप्रेन्द्र स्थितो भवहितं वद इत्युक्ते च तया तत्र स्थितोवाच स दण्डधृक् द्विजोवाच यदि श्रोतुं मना देवी मा स्थाप्यसि भक्तिता वदामि तत्त्वं तत्सर्वं येन ते वयोन्नं भवेत् जानाम्यहं महादेवं सर्वथा गुरुधर्मता प्रवदामि यथार्थं हि सावधानतया शृणु वृषध्वजो महादेवो भस्मदिग्धो जटाधरा व्याघ्रचर्माम्बरधरा संवितो गजकृत्तिना कपालधारी सर्पौघे स्वर्गात्रेषु वेष्टिता विष्टिग्धो भक्षो विरूपाक्षो विभीषणा अव्यक्तजन्मास्ततं ग्रह भोगविवर्जिता दिगम्बरो दशभुजो भूतप्रेतान्विता सदा केन वा कारणेन त्वं तं भर्तरारं समीहसे ज्ञानं ते गतं देवी तद्वद विचारता पूर्वं श्रुतं मया चैव व्रतं तस्य भयङ्करं शृणु ते निगदाम्य यदि ते श्रवणे रुचि दक्षस्य दुहिता साध्वी सती वृषभवाहनं वव्रे पतिं पुरा देवा ततत्संभोगपरीक्षिता कपाली जायते सती दक्षेण परिवर्जिता यज्ञे भागप्रदानाय शम्भुश्रापी विवर्जिता सा तथैवापमानेन भृशं कोपाकुला सती तज्ज्ञासु निप्रयास्तत्र तथा व्यक्तक्ष शङ्करा त्वं स्त्रीरत्नं तव पिता राजनिखिल भूभृतां तथाविधं पतिं कस्मादुग्रेण तपसेहसे दत्त्वा सुवर्णमुद्रां च ग्रहीतुं काचमिच्छसि हित्वा च चन्दनं शुभ्रं कर्दमं लेप्तुमिच्छसि सूर्यतेज प्रतियज्य खद्योतदुतिमिच्छसि चिनाशुकं विहायैव चर्ममाम्बरमिहेच्छसि गृहवासं परित्यज्य वनवासं समीहसे लोमिच्छसि देवेशी त्यक्त्वा शेवधिमुत्तमम् इन्द्रादिलोकपालाक्षं हित्वा शिवमनुव्रता न तैतसूक्तं हि लोकेषु विरुद्धं दृश्यते धुना कत्वं कमलपत्राक्षी कासो वै त्रिविलोचना शशाङ्कवन्दना त्वं च पच्वक्त्र शिवा स्मृता विनिशिरसि ते दिव्या सपर्णीव विभासिता
जटाजूटं शिवस्यैव प्रसिद्धं परिचक्षते। चन्दनं च त्वदीयाङ्गे चिताभस्म शिवस्य च कदुकूलं त्वदीयं वै शाङ्करं कगजाजनं कभूषणानि दिव्यानि कसर्पाशङ्करस्य च कचरा देवता सर्वा क च भूतबलिप्रिया क वा मृदङ्गवादक्ष क च तडुमुरुस्तथा क च भेरीकलापक्ष क च शृङ्गवरोषुभा क च ढकामयशब्दो गलनाद क चाशुभा भवत्याक्ष शिवस्यैव न योक्तं रूपमुत्तमम् यदि द्रव्यं भवेत् तस्य कथं स्यात्तद्दिगम्बर वाहनं च बलिवर्द सामग्री कापि तस्य न वरेषु ये गुणा प्रोक्ता नारिणा सुखदायका तन्मध्ये हि विरूपाक्षे कोऽपि न गुणा स्मृता त्वापि कामुदयिता दग्धस्तेन हरेण च अनार्दरस्तदा दृष्टो हित्वा त्वामन्यतो गता जातिर्न दृश्यते तस्य विद्याज्ञानं तथैव च सहायाक्ष पिशाचा हि विषं कण्ठे हि दृश्यते एकाकी च सदा नित्यं विरागी च विशेषता तस्मात् त्वं हि हरेणैव मनो योक्तुं न चार्हसि क च हारस्तवतीयो वै क च तन्मुण्डमालिका अङ्गराग क दे दिव्य चिताभस्म क तत्तनो सर्वं विरुद्धं रूपादि तव देवी हरस्य च महाम्ना रोचते हो तद् यत्तिच्छसि तथा कुरु अस्तस्तु च यतिं किञ्चित् तत्सर्वं स्वमीहसे निवर्तय मनस्तस्मानो चेदच्छसि तत्कुरु ब्रह्मवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा तस्य विप्रस्य पार्वती उवाच क्रुद्धमनसा शिवनिन्दा परं द्विजम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे ब्रह्मचारी प्रतारन् वाक्यवर्णन नाम सप्तविंशोऽध्यायः। अथाष्टाविंशोऽध्यायः। पार्वती उवाच एतावदी मया ज्ञातं कक्षिधन्योऽयमागता इदानीं सकलं ज्ञातं वध्यस्तं विशेषता त्वयोक्तं विदितं देव तद्लीकं न चान्यथा यदि त्वयोदितं स्यादे विरुद्धं नोच्यते त्वया कदाचित् दृश्यते तादृग्वेषधारी महेश्वरा स्वलील्या परब्रह्मा स्वरागोपात् विग्रह ब्रह्मचारी स्वरूपेण प्रतारयितुमुद्यता अगच्छ छल संयुक्त वचोवादिकयुक्तिता शङ्करस्य स्वरूपं तु जानामि सुवेशिता विशेषता शिवतत्त्वमतो वच्मि सुविचार्य यथार्हता वस्तुतो निर्गुणो ब्रह्मा सगुणो कारणेन स कुतो जातिर्भवेत् तस्य निर्गुणस्य गुणात्मना स सर्वासां हि विद्यानाम् अधिष्ठानं सदाशिव किं तस्य विद्याकार्यं पूर्णस्य परमात्मना विदा उच्छ्वासरूपेण पुरा दत्ताक्षविषन्वे शम्भुना तेन कल्पादो तत्समाकोऽस्ति सुप्रभु सर्वेषामादिभूतस्य वयोमानं कुतस्तथा प्रकृतिस्तौ ततो जाता किं शक्तेस्तस्य कारणमा ये भजन्ति च तं प्रीत्या शक्तिशं शङ्करं सदा तस्मै शक्तित्रयं शम्भु स ददाति सदा वयं तस्यैव भजना जीवो मृत्युञ्जयति निर्भया तस्मान्मृत्युञ्जयनाम प्रसिद्धं भुवनत्रये तस्यैव पक्षपातेन विष्णुर्विष्णुत्वमाप्नुयात् ब्रह्मा त्वं च यथा ब्रह्मा देवादेवत्वमेव च दर्शनार्थ शिवस्यादो यथा गच्छति देवराट् भूतादस्दयस्तत्परस्य
द्वारपाला शिवस्य तु दण्डैक्षमुकुटं विद्वं मृष्टं भवति सर्वथा किं तस्य बहुपक्षेण स्वमेव महाप्रभु कल्याणरूपनिस्पिनस्तस्य सेवयेन किं भवेत् किं न्यूनं तस्य देवस्य मामिच्छति सदाशिवा सप्तजन्मदरिद्रस्यात् सेवे दोषदि शङ्करं तस्यैतत्सेवनाल्लोके लक्ष्मी स्यादन्पायिनी यद्गृहे सिद्ध्योऽष्टौ च नित्यं नृत्यन्ति तोषितं वाङ्मुखा सदा तत्र तदित्थं दुर्लभं कुतः यद्यस्य मङ्गलानि ह सेवते शङ्करस्य न तथापि मङ्गलन्तस्य स्मरणादेव जायते यस्य पूजा प्रभावेन कामा सिद्धन्ति सर्वशः कुतो विकारस्तस्यास्ति निर्विकारस्य सर्वदा शिवेति मङ्गलं नाम मुखे यस्य निरन्तरं तस्यैव दर्शनादन्य पवित्रा सन्ति सर्वदा यत्तु तं भवेदस्सं चितायाक्ष त्वयोदितं नित्यमस्याङ्गदेवै शिरोभिधार्यते कथम् यो देवो जगतां कर्ता भर्ता हर्ता गुणान्विता निर्गुणं शिवसंज्ञक्ष स विज्ञे कथं भवेत् अगुणं रामनो रूपं शिवस्य परमात्मना तत्कथं हि विजानन्ति त्वादृशास्तदहिर्मुखा दुराचाराक्ष पापाक्ष वेदेभ्यो ये विनर्गिता तत्त्वं ते नैव जानन्ति शिव स्यागुणरूपिणा शिवनिन्दा करोति ह तत्त्वं ज्ञाय पुनः पुमान् आजन्म सञ्चितं पुण्यं भस्मीभवति तस्य तत् त्वया निन्दा कृता यात्र हर्ष्यामित् तेजसा त्वत्पूजा च कृता यन्मे तस्मात् पापं भजाम्यहं शिवविद्वेषिणं दृष्ट्वा सचैलं स्नानमाचरेत् शिवविद्वेषिणं दृष्ट्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत् ऋरे दुष्ट त्वया चोक्तमहं जानामि शङ्करं निक्षणेन न विज्ञात शिव एव सनातना यथा तथा भवेद्रुद्रो यथा वा बहुरूपवान् ममामि भीष्टत्वो नित्यं निर्वकारी सतां प्रिय विष्णुर्ब्रह्मापि न समस्तस्य कापि महात्मना कुतोऽन्यनिर्जराध्याक्ष कलाधीना सदैव ते इति बुद्ध्या समालोक्य स्वया सत्या सुतत्वता शिवार्थवन्मागत्य करोमि विपुलं तपा स एव परमेशान सर्वेशो भक्तवत्सला सम्प्राप्तुं मे भिलाषो हि दीनानुग्रहकारकं ब्रह्मवाच इत्युक्ता गिरिजा सा हि गिरीक्षरसुता मुने विरराम शिवं दध्यो निर्विकारेण चेतसा तदा कर्ण्यवचो देव्या ब्रह्मचारी सवैद्विजा पुनर्वचनमाख्यातुं यावदेव प्रचरकर्मे उवाच गिरिजा तावत् स्वसखीं विज्ञाम द्रुतमा शिवसक्तमनोर्वृत्ति शिवनिन्दापराङ्मुखी गिरिजोवाच वार्णीय प्रयत्नेन सख्यं हि द्विजाधमा पुनर्वक्तुमनाक्षेव शिवनिन्दा करिष्यति न केवलं भवेत् पापं निन्दा कर्तु शिवस्य हि यो वै शृणोति तन्निन्दा पापभाक् स भवेदिह शिवनिन्दा करो विद्य सर्वथा शिवकिङ्करे ब्राह्मणक्षेत वैतत्याजयो गन्तव्यं तत् सथलादृतम् अयं दुष्टं पुनर्निन्दा करिष्यति शिवस्य हि ब्राह्मणात्वा बध्यक्षेत्याजयो दृक्षेयः सर्वथा हित्वै तत्सथलमध्ये व्यास्यामो न यत्र माचिरम् अथ सम्भाषणं न स्यादनेना विदुषा पुनः ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा चोमया यावत् पादमुत्क्षिप्यते मुने असोत्वा ताविच्छवा साक्षाद्
दालम्बे प्रियया स्वयं कृत्वा स्वरूपं सुभगं शिवाध्यानं यथा तथा दर्शयित्वा शिवाय तामुवाचा वाङ्मुखी शिवोवाच कुत्र यसी माहित्वा न त्वं त्याजया मया पुनः प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि नादेयं विदिते तव अद्य प्रभृति ते दाससत्पोऽभिक्रीत एव ते कृतोऽस्मि तव सौन्दर्यार्थ क्षणमेकं युगायते त्यज्यतां च त्वया लज्जा मम पत्नी सनातनी गिरिजे त्वं हि सद्बुद्ध्या विचारये महेश्वरी मया परीक्षिता स्वीतं बहुधा दृढमानसे तत्क्षमस्व स्वपराधं मे लोकलीलानुसारिणा न त्वादृशीं प्रणयिनी पश्यामि च त्रिलोकके सर्वथाहं त्वाधीना स्वकां पूर्यतां शिवे इहि प्रिये मत्सकाशं पत्नी त्वं मे वर्षत्व त्वया साकं द्रुतं यास्ये स्वगृहं पर्वतोत्तमम् ब्रह्मोवाच इत्युक्ते देवदेवेन पार्वतीमुद्मापसा तपोजातं तु यत्कष्टं तज्जोः च पुरात्मनः सर्वशमो विनष्टो भूतस्त्यास्तु मुनिसतं फले जाते श्रमपूर्वो जन्तोर्नाशमवाप्नुयात् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे पार्वत्या शिवरूपदर्शन नामाष्टविंशोऽध्यायः। अथेकोनत्रिंशोऽध्यायः। नारद उवाच ब्राह्मणं 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 विधे महाभाग्यजातं तदन्तरं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यं त्वं शिवायश ब्रह्मोवाच देवर्षे श्रूयतां सम्यक् कथयामि कथां मुदा तां महापापसंहन्त्री शिवभक्तिविवर्धिनीं पार्वतीवचनं श्रुत्वा हरस्य परमात्मना दृष्ट्वानन्दकरं रूपं जहर्षातीव च द्विजा प्रत्युवाच महासाध्वी स्वोपकण्ठस्थितं विभुम् अतीव सुखिता देवी प्रीतियुत्फुल्लानना शिवा पार्वती उवाच त्वं नाथो मम देवेश त्वया किं विस्मृतं पुरा दक्षयज्ञविनाशं हि यदर्थं कृतवान् हठात् स त्वं साहं समुत्पन्ना मेनायां कार्यसिद्धये दिवानां देवदेवेश तारकाप्तसुखात्मनां यदि प्रसन्नो देवेश करोषि च कृपां यदि पतिर्भव ममेशान मम वाक्यं कुरु प्रभु पितुर्गहे मया सम्यक् ते त्वदनुज्ञया प्रसिद्धं क्रियतां तद्वे विशुद्धं परमं यशा गन्तव्यं भवता नाथ हिमवत्पार्क्षतो प्रभो याचस्व मा ततो भिक्षुर्भूत्वा लीलाविशारदा तथा तव्या प्रकर्तव्यं लोकेषु क्षयापयन् यशा पितुर्मे सफलं सर्वं कुरुष्वेवं गृहाशमं ऋषिभिर्भोर्दितप्रीत्या स्वबन्धुपविरा परिवारिता करिष्यति न सन्देहस्तव वाक्यं पिता मम दक्षकन्या पुराहं वै पित्रा दत्ता तदा तव यथोक्तविधिना तत्र विवाहो न कृतस्त्वया न ग्रहा पूजितास्तेन दक्षेण जनकेन मे गृहे नानाविशेषतेन सचेन्द्रोऽयं महानभूत् तस्माद्यथोक्तविधिना कर्तुमर्हसि मे प्रभु विवाहं त्वं महादेव देवानां कार्यसिद्धये विवाहस्य यथा रीतिः कर्तव्या स तथा ध्रुवं जानातु हिमवान् सम्यक् कृतं पुत्र्या शुभं तपः ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा सुप्रसन्नं सदाशिवः प्रवाच वचनं प्रीत्या गिरिजां प्रहसन्निव
शिववाच शृणु देवी महेशानि परमं वचनं मम यथोचितं सुमाङ्गल्यं विकारी तथा कुरु ब्रह्मादिकानि भूतानि संनित्यानि वरानने दृष्टं यत्सर्वमेतच्च नक्षरं विधिभामिनि इकोनेकत्वमापन्नो निर्गुणो हि गुणान् विता स्वजयोत्सन्यायो विभाति परज्योत्सनान् वितो भवत् स्वतन्त्रपरतङ्क्षतव्या देवी कृतो ह्वावं सर्वकर्त्री च प्रकृति महामाया त्वमेव हि मायामयं कृत्मिदं च जगत्समग्रं सुवर्त् मनाहि विधृतं परया स्वबुद्ध सर्वात्मभिः सुकृतिभिः परमात्मा भावे संस्कृतमात्मनि गणे परिवेष्टित्वञ्च के ग्रहा के ऋत्गुणा के वाण्यपि त्वया ग्रहा किमुक्तं चाधुना देवी शिवाय वर्णिनि गुणाकार्य प्रब्धिना वाभ्यां प्रादुर्भवकृता भक्तहेतोर्जगत्सिमन् भक्तवत्सल भावता त्वं हि वै प्रकृति सूक्ष्मा रज सत्वत्मोमयी व्यापारदक्षास्ततं सगुणा निर्गुणापि च सर्वेषामि भूतानामहमात्मा सुमध्यमे निर्विकारी निरीहक्ष भक्तेच्छोपात् विग्रहे हिमालयं न गच्छेयं जनकं तव शैलजे तत्सत्त्वां भिक्षुको भूत्वा न याचे कथचन महागुणैर्गरिष्ठोऽपि महात्मापि गिरीन्द्रजे देहीति वचनात् सद्य पुरुषो याति लाघवम् इत्थं ज्ञात्वा तु कल्याणी किस्माकं वदस्यथ कार्यं तव त्याज्ञा भद्रे यथेच्छसि तथा कुरु ब्रह्मवाच तेनोक्तापि महादेवी सा साध्वी लेक्षणा जगाद शङ्करा भक्त्या सुप्रणम्य पुनः पुनः पार्वती उवाच त्वमात्मा प्रकृतिश्राहं नात्र कार्या विचारणा स्वतन्त्रो भक्तवश्यगो निर्गुणो सुगान्वपि प्रत्यनेन त्वया शम्भो कार्यं वाक्यं मम प्रभो यजस्व माहिं गिरे सौभाग्यं देहि शङ्कर कृपां कुरु महेशान तव भक्तास्मि नित्यश तव पत्नी सदा नाथ अहं जन्मि जन्मनि त्वं ब्रह्मा परमात्मा हि निर्गुणा प्रकृते परा निर्विकारी निरीहक्ष स्वतन्त्र परमेश्वरा तथापि सगुणोऽपि भक्तो द्वारपरायण विहारी स्वात्मनि रतो नानालीलाविशारदा स्वर्था त्वामहं जाने महादेव महेश्वरा किमुक्तेन च सर्वज्ञ बहुना हि दयां कुरु विस्तार्य यशो लोके कृत्वा लीलामहादुतां यत्सुगीयजनानाथान् सोत्तीर्णा हवां बुद्धिं ब्रह्मवाच इत्येवमुक्त्वा गिरिजा सुप्रणम्य पुनः पुनः विराम महेशानं नतस्कन्धाकृताञ्जलि इत्येवमुक्तस्तया महात्मा महेश्वरो लोकविडम्बनाय तथेति मत्वा प्रहसन्ना बभूव मुदान्विता कर्तुमनास्तदेव ततोऽहर्षशम्भुर्बभूव सुप्रहर्षिता किला सम्प्रययो काल्या विरहाकृष्टमानसा तत्र गत्वा महेशानो नन्द्याधिभ्यस ऊर्जिवान् वृत्तान्तसकलं ते वै परमानन्दनिर्भरा तेऽपि श्रुत्वा गणाः सर्वे भैरवाद्याक्ष सर्वशः बभूव सुखिनो तथ्यन्तविदुधु परमोत्सवं महत्सु मङ्गलं तत्र बभूवातीव नारदा सर्वेषां दुःखनाशो भूद्रुतप्रपापि समुद्यम इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीये
या रुद्रसहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे शिवा शिव संवाद वर्णन नामे कौन त्रिंशोऽध्याय।